Bismillahirrahmanirrahim. Today topic of my discussion is about oxidizing agent. What is oxidizing agent and how it can be defined? Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे कि oxidizing agent क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं. So first of all, those species which oxidize other substance and cell get reduced is called oxidizing agent. Oxidizing agent ऐसी species होते हैं जो दूसरी substance को oxidize करते हैं और self जो है बजाते खुद जो है वो reduce होते हैं, तो ऐसी species को oxidizing agent कहते हैं. For example, potassium permanganate KMnO4 is oxidizing agent. Nitric acid is also oxidizing agent because it provides oxygen. Its formula is HNO3, Cl2, etc. etc. are the example of oxidizing agent. These species provide oxygen to other substance, remove electron from other substance, accept hydrogen from other substance. So these are oxidizing agents. So let us understand with a simple diagram. So we in this diagram, compound B is oxidizing agent because it oxidizes compound A. So compound B remove electron from compound A. So positive charge increase on compound A and negative charge increase on compound B. Why? Because it gain accept electron from compound A. So positive charge increase on A while negative charge increase on B because B accept electron from A. So कंपाउंड बी इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. डियर स्टूडेंट, कंपाउंड बी जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो कंपाउंड ए से जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन हटाता है. सो कंपाउंड ए पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता है और कंपाउंड बी पर नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ता है. सो कंपाउंड बी is oxidizing agent. Guluma shumano B compound से कमने दास दे oxidizing agent दे जका चिदा compound A ना इलेक्ट्रॉन रिमूव कई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कई, नो लिहाजा पर compound A बने प्लस चार्ज कम दे दा इंक्रीज की गयो, पर कंपाउंड बी बंदे माइनस चार्ज देगा इंक्रीज की गई. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कई और कंपाउंड ए कम दे दा इलेक्ट्रॉन से कयो लूज कई. ठीक ना. सो वी आल्सो से दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is the donor of oxygen to other substance. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशीज होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है. एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दूसरी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं. एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दूसरी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो है द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज होता है. गुलमा शुमानो का तसुगुर जमादा में मकसद दादे चिकम ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज दे द ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज प्रोवाइड कई बा ऑक्सीजन प्रोवाइड कई. ठीक शो हाइड्रोजन बा एक्सेप्ट कई, इलेक्ट्रॉन बा एक्सेप्ट कई. चिकला हाइड्रोजन एक्सेप्ट की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की नो पदे दौरान के बाद द ऑक्सीडेशन नंबर चिकम देगा बस की डिक्रीज की. ठीक शो लेट अस अंडरस्टैंड विद अ सिंपल एग्जांपल. सो the reaction of zinc with copper oxide, it will form zinc oxide plus copper. In this reaction you see here that there is zero oxidation state of zinc while the oxidation state of copper is 2 plus and the oxidation state of oxygen is 2 minus. So on the right side the oxidation state of zinc is a 2 plus and the oxidation state of oxygen is 2 minus. Similarly the oxidation state of copper is 0. So in this example you see here that the copper oxide is oxidizing agent. Why it oxidizing agent? Because it oxidizes zinc from 0 to plus 2 and self get reduced from plus 2 to 0. Dear student, कहने का मकसद ये है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिकॉज इट इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन जिंक. So zinc is oxidized from 0 to plus 2. At remove electron, 2 electron remove from zinc. zinc से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया, उसको हटाया. सो इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ गया और ख़ुद कॉपर से
कॉपर पर जो +2 चार्ज था वो 0 पे आ गया. So at oxidizing agent while zinc is a reducing agent. गुलो मश मनो कता सो दे एग्जांपल तो गोरे नो कॉपर ऑक्साइड च कने दा oxidizing agent जका च दे जिंक सको आगे ऑक्सीडाइज को इन 0 नाले +2 था ठीक शो हो कता सो कॉपर तो गोरे द +2 नाले 0 था नो oxidizing agent आगे च बलता ऑक्सीजन प्रोवाइड कई तागना हाइड्रोजन एक्सेप्ट कई तागना इलेक्ट्रॉन लूज कई ने सो oxidizing agent. Let us discuss another example. So the reaction of SN2 plus with Cl2 molecule, it will form Sn power plus 2 chlorine negative ion. Dear student, in this example you see that there is zero oxidation state of chlorine while the oxidation state of Sn plus 2 on the left side, while on the right side you see that Sn oxidized from +2 to plus power. So oxidation state increase on Sn10 plus power on the right side, while chlorine oxidation state at 0 on the right side, while its oxidation state decrease from 0 to -1. So chlorine is a oxidizing agent because it oxidizes Sn plus 2 to plus power. Dear student, क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि क्लोरीन ने Sn10 को ऑक्सीडाइज किया +2 से प्लस पावर पे आ गया. क्लोरीन बजाते खुद 0 से माइनस पे आ गया. सो क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. गुलो माशो मानो बिना मकसद दारे का तासुगुर दे एग्जांपल था क्लोरीन चिकम दे पदबाने 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दे Sn माने +2 दे नो क्लोरीन चिकम दे द इलेक्ट्रॉन सकलो एक्सेप्ट करो द Sn ना ठीक शो नो का तासुगुर Sn द +2 ना लाले प्लस पावर था ठीक शो और क्लोरीन द 0 ना लाले minus था नो लिहाजा क्लोरीन जमा सर से क्लोरीन मॉलिक्यूल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो आई होप दिस lesson will be helpful in your study. Dear student, I request you like, subscribe and share my videos.